A very good morning to all of you. As you know that today we have gathered here for a very important purpose, and that is the celebration of our 73rd Republic Day. So before we begin our program, I request our Sister Principal, Reverend Sister Shubha, and the other sisters also to kindly come and take her seats with us. We are indeed very happy to have Sister Crescentia amongst us. Let's welcome all the sisters with a huge round of applause. Thank you very much. Namaste Sada Vatsale Matru Bhume Tvaya Hindu Bhumi Sukham Varthitoham Mahamangale Punya Bhume Tvadarthi Patatvesh Kayo Namaste Namaste. Respected Sister Principal, all sisters and dear teachers, a very good morning to all of you. As we have gathered here to celebrate the 73rd Republic Day of our country, I welcome you here on this auspicious day and wish you a very happy Republic Day. On this day in 1950, the Constitution of our country came in. I request Honorable Reverend Sister Crescentia to come forward for the flag hoisting. Along with her, I request our Principal, Reverend Sister for the freedom of India and to give us a republic nation. So now I welcome Vidisha ma'am on the stage and request her to take us on a journey of the annals of our country through her speech. Justice, liberty, equality, fraternity. I am proud to be an Indian. Respected Principal, Reverend Sister Shubha, sisters and my dear teachers, I wish you all a happy 73 Republic Day. I am obliged and honored to be here speaking before you all on this special occasion. Republic Day is celebrated every year on 26 January. It has a special significance in the history of India to make the event memorable. The national event is celebrated every year with a lot of joy, happiness and pride in our hearts. As we know, on 26 January 1950, the Indian Constitution came into effect. And so from that day, we, the people of India, constantly praise it as the Republic Day of our country. A committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft of the Indian Constitution, which was adopted on 26 November 1949 and officially came into effect on 26 January 1950. Enjoy the privilege to elect their leader to lead the country. Although there has been a lot of improvement till now, it can also be said that we have been facing a few problems such as discrimination of caste and creed, poverty, unemployment, etc. Apart from this, the last 2 years have been very challenging us. We all have been facing the global catastrophe, the COVID-19. One thing we all can do is to promise each other
that we will become a better version of ourselves so that we could contribute to solving all these problems and making our nation a better place. As I come to the end of my speech, I would like to recall the famous quote of Mark Twain as he said, India is the cradle of the human race, mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. We are Indian, firstly and lastly. Jai Hind, Jai Bharat. और अब इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं आमंत्रित करती हूँ दीपा शर्मा मैम को कि वो यहाँ आएं और अपनी एक स्वरचित कविता हमारे सामने प्रस्तुत करें। वतन की खातिर हर नई आवाज को परवान चढ़ना चाहिए, पत्तियों से आस नहीं शाख हिलनी चाहिए, शाख हिलनी चाहिए, हर शाख हिलनी चाहिए। देश में बहरूपियों की क्यों नजर आती हैं शक्लें, जनतंत्र में देशद्रोहियों का राज न चलना चाहिए, राज न चलना चाहिए। जो वतन की आबरू में मर मिटे हैं जान पर, जो वतन की आबरू में मर मिटे हैं जान पर, उन शहीदों के नाम से त्योहार मनाने चाहिए, त्योहार मनाने चाहिए। देश की सीमाओं पर क्यों उठ रही चिंगारियां को खाक करने की सौगंध खानी चाहिए, सौगंध खानी चाहिए। हिम्मत कहाँ किसी में जो हमको ललकार पाएगा, दुश्मन को धूल चटाने की हर कोशिश करनी चाहिए, हर कोशिश करनी चाहिए। हम मिट्टी नहीं फौलाद हैं, दुश्मन की क्या औकात है, हम मिट्टी नहीं फौलाद हैं, दुश्मन की क्या औकात है। भारत के कोने कोने में तिरंगा फहरना चाहिए, तिरंगा फहरना चाहिए। ये देश है वीर जवानों का, ये देश है वीर जवानों का, देशभक्त परवानों का, ये देश है वीर जवानों का, देशभक्त परवानों का। वतन की रक्षा की खातिर तिरंगे का कफन बनाना चाहिए, तिरंगे का कफन बनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। It is really very true that the writers and the poets played a vital role in the freedom struggle of India. Each word and each line of their poems and songs kindled a flame of patriotism in the hearts of everyone at that time. So now, let our hearts be filled with the same feeling of patriotism by enjoying a song that is going to be presented before us by our teachers. अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमीं का परचम लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो,
great leaders, and all the other Indians who sacrificed their lives for the freedom of this country. So now I welcome Mahendra Prajapati sir on the stage for his speech. Mr. Vice Principal, Sisters और टीचर्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं अपने विचार आपके पास प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये वो देश है जहाँ दशरथ मांझी जब छेनी हथौड़ा हाथ में लेकर निकलता है तो पूरे पहाड़ को रास्ते से साफ कर देता है। ये वही देश है जहाँ एक साधारण स्कूल से पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी जब मिसाइल बनाना शुरू करता है तो मिसाइलों के पहाड़ बना देता है। ये वही देश है जहाँ विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य जब अपनी शिखा में गांठ लगा देते हैं तो धनंजय जैसे राजा को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ती है। ये वही देश है जहाँ एक सारथी जब उपदेश देता है तो वो गीता बन जाता है। ये वही देश है जहाँ गौरव बादल और जब युद्ध करते हैं तो बिना सिर के ही एक प्रहर तक युद्ध लड़ते रहते हैं। ये वही देश है जहाँ एक पद्मनी के पीछे सैकड़ों पद्मनियाँ अंगारों पर चलने और मरने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हम संख्या में लोगों की गिनती तो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जितनी घटनाएं, जितने वीर, जितने योद्धा, जितने मंदिर, जितने मस्जिद, जितने गुरुद्वारे, जितने चर्च हैं, उसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। अनंत है। हम अब 73वां गणतंत्र दिवस जरूर मना रहे हैं, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो दिवस हमारे देश में मनाए जाते हैं वो 15 अगस्त के नाम पर हो या 26 जनवरी के नाम पर, खैर मनाना ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आपको शायद, मुझे मालूम है या नहीं, ये वही धरती है अजमेर की जहाँ अंग्रेजों को पहली बार परमिशन मिली कि आप यहाँ भारत में आकर व्यापार करिए। और ये वही अजमेर है जहाँ पर 15 अगस्त पर 47 को जब पहली बार झंडा फहराया गया तो उसी जगह पर फहराया गया जिस जगह से उन अंग्रेजों को परमिशन दी गई थी। ये तथ्य शायद ही आप लोगों को मालूम हो। कुछ लोग शायद जानते हैं क्यों। अजमेर के अंदर नया बाज़ार में एक म्यूज़ियम बना हुआ है जिसे अकबर का किला मैगज़ीन कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर 1616 ईस्वी के अंदर, शायद 1616 ही था, 1612 से कोशिश की गई अंग्रेज़ों के द्वारा परमिशन लेने की और 1612 में जाकर उन्हें सफलता हासिल हुई। उन्हें परमिशन दी गई राजा जहांगीर के द्वारा और इसी जगह पर झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस की घोषणा भी की गई थी अजमेर में। अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज करने के लिए 34,735 कानून लगभग बनाए थे और आज आज़ादी के लगभग 75 वर्ष से ज़्यादा हम पूर्ण कर चुके हैं। आज भी वही कानून, मैक्सिमम वही कानून आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। मैं कुछ कानूनों के बारे में आपको बताता हूँ। 1860 के पहले तक हमारे देश में पुलिस की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, केवल सेना हुआ करती थी। हमारा देश वो देश है जहाँ कई चक्रवर्ती राजाओं ने शासन किया, लेकिन कभी भी किसी ने पुलिस नहीं बनाई। ये कानून अंग्रेजों ने हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, हमारे देश पर राज करने के लिए बनाए थे और हम आज तक उन्हें फॉलो करते आए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ। आप लोग क्लास में जाते हैं, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई करवाते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली हमारे जो स्विचेस है वो नीचे की तरफ ऑन होते हैं, लेकिन आपने जब एमसीबी चलाया होगा कंप्यूटर का तो ऊपर आपको ऑन करना पड़ता है उससे। सभी जानते होंगे आप लोग। आपको पता ये अंतर क्यों है? ये अंतर एक देश की आज़ादी की पहचान है। आप जानते हैं हमारे देश में जब हम 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो हम राइट हैंड पर बैठते हैं, लेकिन आप जानते होंगे अमेरिका में और दूसरे देशों में वहाँ लेफ्ट में बैठा जाता है। आप जानते हैं हमारे देश में हम लेफ्ट में चलते हैं सड़क पर, अमेरिका में राइट में चलते हैं। ये डिफरेंस क्यों है? आपने शायद कभी गौर नहीं किया होगा। जिस समय अमेरिका आज़ाद हुआ उन्होंने सबसे पहला यही काम किया कि जो काम अंग्रेज करते थे हमें वो काम करना ही नहीं है, हमें उसका उल्टा ही काम करना है। पुराने टाइम में एक प्रथा हुआ करती थी, दास प्रथा, जिसमें जो
दास हुआ करते तो उनके शरीर पर एक डाम लगा दिया जाया करता था ताकि उनकी पहचान बनी रहे, है ना, कि ये दास है। और उसके मन में एक भावना आ जाया करती थी कि हाँ मैं दास ही हूँ और मुझे दास ही रहना है। उसके बच्चे भी यही सोचकर बड़े होते थे कि हम तो दास कुल में जन्मे हैं, हम दास ही रहने वाले हैं, हमें कभी आज़ादी मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि नहीं मैं आज़ादी हासिल कर सकता हूँ, उसे अपना पुराना जो वैभव है अगर वो मालूम पड़ जाए तो वो कहाँ पहुँचेगा। तो हमारे साथ भी यही हुआ है। हमारा इतिहास जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि हम 1756 यानी अंग्रेज़ 1605 में जब भारत आए और उन्हें परमिशन मिली, उसके बाद से लेकर 1765 में प्लासी की युद्ध और उसके बाद से हम केवल गुलाम ही रहे हैं। हमने कुछ हासिल नहीं किया, हमने कुछ नहीं बनाया। एक छोटी सी और बात आपको बताता हूँ। 1903 से पहले कोई नहीं जानता था, कोई सोचता भी नहीं था कि इंसान उड़ सकता है। ये बातें केवल भारत वाले ही जानते थे कि हाँ इंसान उड़ सकता है और उड़ता भी था, है ना। 1543 AD से पहले केवल भारत ही जानता था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। कोपरनिकस को तो अभी मालूम पड़ा था। शून्य का आविष्कार हमारे यहाँ 628 ईस्वी में, और उससे पहले भी हमें पता था। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपको शायद पता होगा, हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें बताते कि रावण के 100 सिर हैं और 100 की काउंटिंग तभी की जा सकती है जब 2 शून्य आगे लगे हों। इसका मतलब है कि हमें रामायण काल में भी मालूम था कि हमारे शून्य का ज्ञान हमें था उस समय। हमें इसका एक्चुअल लिखित तो पता नहीं। हम काफ़ी समय से कहते हैं कि हमारे यहाँ 18 पुराण हैं। हमारे यहाँ जो ज्योतिष शास्त्र है वो हज़ारों सालों से चला आ रहा है, हमें नहीं मालूम कहाँ से चला आ रहा है। अकाउंटेंसी मैं जो पढ़ाता हूँ हमें नहीं पता कहाँ से चला आ रहा है, हम जानते हैं। लेकिन आधुनिक काल में जो हम पर थोपा गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपने केवल ये किया है, आपने केवल पढ़ा है, बनाया हमने है, एरोप्लेन हमने बनाए हैं, मैथमेटिक्स हमने बनाया है, सब हमारी बनाई चीज़ें, लेकिन हमें पढ़ाई जाती कि आपने कुछ नहीं बनाया। मीन्स हमें उस दास प्रथा की तरह हमारे शरीर पर एक डाम लगा दिया गया कि आप 1947 में आज़ाद हुए हो, और वही काम हम करते आए हैं। अंग्रेजों के 34,735 कानून आज भी हम फॉलो कर रहे हैं और शायद करते रहें। हो सकता है कोई बदलाव आगे आने वाले वर्षों में हो और हम इस बेड़ियों से अपने आप को आज़ाद कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत। Now, as we are proceeding ahead in our celebration today, I have an opportunity to request our Honorable Principal, Reverend Sister Shubha, to kindly come on the stage and enlighten us with her words of wisdom and intelligence. सारी जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। Nothing is more precious than independence and freedom. A very good morning to Reverend Sisters, my dear teachers, and dear children. Even though children are not present here physically, we assume that they are with us. I extend my warm greetings to all of you on this 73rd Independence Day. As we have already heard from our eminent speakers, the details about the sacrifices of our freedom fighters, how Constitution came into existence, how our India became Purna Swaraj. You may also find some contradiction what I am going to say, what they have delivered here. So let me share a couple of reflections. Whenever I reflect on our country, several things come to my mind. But today I would like to focus on 2 things, because it is very pertinent, and when we talk about 21st century and in today's context,
The first thing is something to be happy about India. We have varied culture, diversity, and varieties of things of which we are proud of. Among all this, what makes me a real citizen is our Indian Constitution. If you travel to other countries, they always refer our Constitution. Beautiful values are inscribed in it. Our Constitution has a preamble and 470 articles which are grouped into 25 parts. I hope all of you have read it and assimilated too. And I can really say that after having reflected so many perspectives, in spite of the poverty, illiteracy, corruptions, exploitations, selfishness, in spite of very dominion culture, our country, India, continues the largest democracy in the world. And the binding factor, you know, what is that? None other than our Constitution. Secondly, it is appraisable, the achievements of India. India gained a lot after its independence, keeping our head high. Let's say with Rabindranath Tagore, into that heaven of freedom, let my country await. Crossing all the barriers and casting behind all the difficulties, India is one of the nations who reached in the moon. Today, India is the second superpower in Asia and also one of the 7 leading superpowers of the universe. No nation becomes great by itself. We, the citizen, who makes it great. Our dedication, our commitment towards the responsibilities, our thought, our truthfulness and morality, our authenticity, liability, and our talents, which make our nation great. So, dear teachers, let's feel proud to be the citizen of this such great nation. Let us also proud to our beloved nation. You may be thinking, strictly speaking, just against of something contradiction. What a confusing matter this. This is also a reality. Why I am saying it? Because we should see both sides, both perceptions. It will enable us to grow. This both perception enable us to grow, because then only we will be able to grow as a free citizen, free Indian. Just to think of that. We are in the age of 4Gs and 5Gs today. In the period of 4G, at this period of 4G, I would like to draw your attention towards 4Bs, starting with the dream.
D for dream, D for dedication, D for determination, D for discipline. To achieve our goal, our vision, our dreams, we all must have these 4 Ds in our lives. So dear teachers, start to dream, because dream doesn't get always to everyone. To see dream, we should have eyes. To fulfill it, we must have zealous heart and burning desires. So, let us lit that fire in us, in our leaders, in our youth, and in our students. It is our prime duty. It is the responsibility of you and me. Just take the Hindi word youth. We all know that youth have tremendous power. This is एक ऐसा शब्द है. When we read backward this youth, what will become it? Just read youth backward, what will be? Yuva, read backward. Vayu, it become Vayu. This Vayu, air, got so tremendous power in it that it can build up and it can destroy too. But when we set it in one direction, it can produce electricity. This light which can dispel the darkness. Which can dispel the darkness of our family, our own mind, our society. Can dispel the darkness of our country, can dispel the darkness of our universe at large. So, dear teachers, let us keep alive our dream, our vision, and our responsibilities towards our country more zealously and enthusiastically. Let's take an oath that we will change ourselves. We will become the agents of the changes, and we will help and inspire others, the leaders, our teachers, parents, youth, children, our students, that they also become the agents of change. So collectively, we can strive to make our country vibrant, strong, and supreme. Let's take a pledge today that I will live for my country till the last breath of my life. Freedom in our mind, faith in our words, pride in our hearts, memories in our souls. Let's salute our nation on this very Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, Sister, for such inspiring speech to us. You have really motivated us to develop the 4 Ds in our life. Once again, I wish you all a very happy Republic Day.